अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। आपके साथ फिर एक नए एपिसोड लेकर क्रिकेट क्लिनिक साइम मुदस्सिर और आसिफ हाजिर हैं। इस एपिसोड में वी गोना डू अ क्विक sort of recap of not a recap but we're going to give an overview of the upcoming T20 series against New Zealand. क्या सिग्निफिकेंस है इस सीरीज की? बिग पिक्चर देखेंगे, जिस तरह कि आपको पता है कि इस साल जून में वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इस सीरीज की क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, टीम कॉम्पोजिशन पे बात कर लेंगे, और ओवरऑल हमारी स्ट्रैटेजी में क्या पीछे शॉर्ट कमिंग्स थी जो अब हमें पूरी करनी है। अम, सबसे पहले हम शेयर कर लेते हैं जो हमारे जो अनाउंस हुए हैं प्रोबेबल टीम मेंबर्स और प्रोबेबल 11। उसके अंदर जो स्क्वाड ओवरऑल पिक हुआ था, हमारा स्क्वाड ऑफ 15 और 17 प्लेयर्स, उसमें शाहीन इज देयर, आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, आजम खान, बाबर, फखर, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, चाचा इफ्तिखार, नवाज, रिजवान, वसीम जूनियर, फरहान, साइम, उसामा, and have I left anyone else? Zaman Khan and Abrar as well. And जमान खान एंड अबरार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे जो है इसके अंदर से टीम हमारी पिक होनी है। तो सबसे पहले ओवरऑल बिग बात कर लेते हैं कि कैसे हैं आपको should be using this more of sort of an experiment for the upcoming World Cup, and the winning or losing doesn't matter that much, या आप कहेंगे कि नहीं, गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप बिकॉज बहुत ज्यादा मैचेस नहीं है, तो वी नीड टू गेट इनटू sort of the winning habit, तो वी शुड गो विद आवर sort of बेस्ट 11 यहीं से। इस डिबेट के ऊपर बात कर लेते हैं। कौन आप दोनों में से स्टार्ट करना चाहेगा? Go ahead, यार Mudassir. सबसे दिस इज इंटरेस्टिंग कि ये टूर की लिस्ट है और इसमें वी हैव लाइक 17 प्लेयर्स। आई थिंक इज बिट टू मच। अगर आप लिस्ट देखो तो हु इज मिसिंग ओवरऑल? नसीम शाह इज मिसिंग बिकॉज ऑफ फिटनेस। शादाब इज अनफिट, तो ये 19 हो गए। और गूगल मिसिंग है आपका। गूगल को, हाँ, क्योंकि गूगल के साथ ये हुआ था कि ही वाज अ पाकिस्तान ए कैप्टन। मोहम्मद तो हारिस। he score in emerging cup, he failed basically in emerging cup and he failed in Zimbabwe जो हम हार गए थे। हाँ। और डोमेस्टिक में भी उससे रन नहीं हुआ है। मतलब वो T20 में आई थिंक ही इज फाइन। वो उस ओडीआई में ही फ्लॉप बिग टाइम। आई थिंक सिलेक्टर्स ने देखा कि ही इज नॉट इन अ गुड फॉर्म, तो हसीबुल्लाह को चांस दिया। तो खैर आप उसे इंक्लूड कर सकते हो। जो टैलेंट पूल है, आई थिंक इंग्लैंड है या इंडिया का यही यही करते हैं कि आपके पास 20-25 प्लेयर होने चाहिए। तो आई एग्री कि जो ये 17 जो नजर आ रहे हैं ना, दीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। 2-3 लोग प्लेयर्स मिसिंग है इन द एंटायर क्रिकेटिंग सिस्टम। और द ओनली वन एक्सेप्शन नवाज। आई डोंट नो व्हाई नवाज इज देयर, आई हैव नो आइडिया। तो इसमें से आइडियली ये होता है कि 13 या 15 ले जाते हैं, एक दो को छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल से दिस अभी वर्ल्ड कप में थोड़ा टाइम है। लोग कह रहे हैं बाबर आउट ऑफ फॉर्म है। आई डोंट थिंक ही इज आउट ऑफ फॉर्म। आई थिंक ही इज सैचुरेटेड, ही नीड्स टू क्लियर हिज माइंड। बाबर, रिजवान, अब शाहीन को आपने कैप्टन बना दिया, तो ही हैज टू प्ले, वो भी सैचुरेटेड है। आई थिंक these three guys could have just dropped or rested them, Babar, Rizwan and Shaheen. उससे होता ये है कि you can Shahin's try। your captain. I know, but it's a wrong captain, वो तो हम पहले ही बोल चुके हैं, it's not going to work out, he's not even fit to be a captain। खैर ये तीन अच्छा। ये तीन इन्होंने गलत ले जा रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? अब आपके पास इतनी सेट, अब इन 17 में से 5 ओपनर हैं, वो खेल ही नहीं सकते। शहजादा, फरहान, साइम, फखर और बाबर, रिजवान, ये 5 ओपनर तो नहीं खेल सकते ना सही तरह। तो अगर आप मुझसे पूछा, आई थिंक टू कीप इट शॉर्ट, वी हैव टू मेक आवर बेंच, क्योंकि अगर एक दो प्लेयर अनफिट होते हैं, आप टीम बैठ जाती है। तो मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि बाबर, रिजवान को लेगेसी के लिए पहले 2 मैच खिला दे। अगर जीतते हैं तो ठीक है, मगर साइम नीड्स 3 to 5 गेम्स। और नॉनसेंस नहीं करेंगे उसको 4 डाउन खिला देंगे, फखर आपका 1 डाउन है। इफ साइम इज प्लेइंग, ही हैज टू ओपन। और अगर किसी मैच में बाबर, रिजवान बैठते हैं, तो फखर, साइम कैन ओपन एंड यू हैव हसीबुल्लाह। ही नीड्स, एंड द गुड थिंग अबाउट हसीबुल्लाह इज he's an opener, he also plays at number 4। तो आई थिंक स्क्वाड बहुत ज्यादा है। इट विल बी हार्ड टू
मुझसे जैसे साहबजादा फरहान का मुझे बेचारे का लग नहीं रहा कि he is going to even play. Same thing with bowler. We have too many fast bowlers. अच्छा, अगर रिजवान और बाबर खेलेंगे तो आपको कोई लगता है कि इनमें से कोई एक नीचे आएगा, या बिकॉज अगर दोनों आपके लेगेसी के लिए खिला दो, आई थॉट वन ऑफ द थिंग्स वी शुड ट्राई इज एटलीस्ट यू नो sort of solidify our opening slot, और उसके अंदर इस वक्त दोनों को ओपनिंग स्लॉट से हटा देना might be in their mind too risky of a move, but कम से कम एक को नीचे लाया जा सकता है. तो अगर एक को नीचे लाया जा सकता है, तो can we try a बाबर साइम कॉम्बिनेशन, जो कि पेशावर जल्मी जिस तरह करता है. इसके बारे में क्या ख्याल आते हैं आसिफ आपके, the opening partnership with, or I mean, just to back up to answer your first question, I think this is not a very important. I mean, the results should not be important, but the problem is we have such a temperamental fan base that if we don't focus on the results, then a few results going the other way is going to make everyone start panicking, and that's not. I've said before, perspective. Our goal now, we shift our goals each time, is the World Cup. So this is a question of, we have our core group of players, like Mudassir is saying, we have our core group of players. Now it's a question of finding the right combinations. Like you said, the opening thing is part of that. We have always said, I think this is one of the things that we all agree on, is that the opening combination of Babar and Rizwan is it raises the floor, but it really lowers the ceiling. T20, you want explosive openers who can really take the match away. If you ask me, I would do Fakhr and Saim. You're right, they're never going to do that. And what you say about having Babar and Saim open, it seems logical, it seems to make sense, and yet I think our coaching staff and the heads at the top are not going to think of it. There's too much, again, Shaheen is a captain. Mudassir said what he said about that. Shaheen is Babar's man, and they all have deference to Babar, and so they're going to continue a lot of, like you said, the legacy of what they've done. I disagree with that, but I'd love if they'd switch things around. Saim is an opener. Fakhr is an opener. Rizwan and Babar did well, but they were makeshift openers. But I can only hope. I don't harbor any expectation that they will do that. Which is unfortunate, because this is the time to experiment. This is the time to really see, what do you lose if you try them? If they both collapse again and again and again, then you know that they're not the ones. And in the back pocket, Rizwan and Babar are there. If you're not going to experiment now, then when are you going to experiment? मसला ये होता है कि जिस तरह आपने पिछली एपिसोड में भी बात की थी कि वो फिर एक इनिंग ऐसी कर देते हैं कि वो फिर जिस तरह वो 152 विदाउट लॉस जो उन्होंने चेज किया अगेंस्ट इंडिया, वो इतना हमारे मेमोरी के अंदर वो कैप्चर हो चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है, कि उससे फिर हटना और कहना कि यार कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमें इस तरह कन्विंसिंगली लेके दे सकता है. If they were chasing 152, if they were chasing 220, I don't think these guys could do that. और दूसरी बात लोग भूल जाते हैं, इसी 152 for 0 के बाद we had a slow start in the final. Fakhr saved us by hitting start 3 sixes, like 50 not out. 170 odd बना दिया उसने. Then we lost in Asia Cup final because Rizwan played too slow, chasing 170. Then T20 World Cup जो ऑस्ट्रेलिया में था, Babar Rizwan failed except for one semi-final, and Shan was the top scorer at one down. तो वो हमारी मेमोरी बड़ी सिलेक्टिव है हमारी. तो अगर आप ऑन मेमोरी पे देखो ना, Babar is not even in form. तो अब हम 3 साल से हम लेगेसी को खिलाते रहेंगे, ठीक है, हम 5 टूर्नामेंट हार चुके हैं मेरे ख्याल से, 4 टूर्नामेंट. And Rizwan, I was going to say, go ahead. एक चीज बड़ी, I have one more thing very interesting. मैं यार अगर रेस्ट, मेरा अपना ख्याल है इनको रेस्ट का कह के ड्रॉप का वर्ड ही यूज नहीं करें, रेस्ट दे दें दोनों को. उससे होगा पता है क्या, देन फखर एंड साइम कैन ओपन विदाउट एनी प्रेशर. और जब रिजवान का प्रॉब्लम ये होता है कि वो ही सेज हिमसेल्फ के 5 छठे पे उसको नखरे करता है वो वाइट बॉल में, तो बेहतर तो हसीबुल्लाह को आप खिला सकते हो, तो उसको भी चांस मिल जाएगा एक यंग टेस्ट करने के लिए. रिजवान के लिए बैकअप तो होना चाहिए ना बेंच पे. तो मेरा ख्याल से कम से कम 2-3 मैच में दोनों को आप रेस्ट दे दें, ओपन करें फखर और साइम से. और हसीबुल्लाह is your batsman who can bat at 4 or 5, and he's in as good, I mean Saim जैसा तो नहीं है I guess, but he might be the second best right now. टाइमिंग भी अच्छी है. So I think we really need to test our bench. वरना वो सेम टीम खिलाते हैं फिर फायदा क्या. And Rizwan actually is a good closer. Nobody focuses on that. Okay, how many matches have we had where Rizwan opens and then he's not out at the end? He actually is very good at pacing a chase towards the end of an innings.
So, but he will play so many dot balls at the beginning of an innings. And, look, I have tremendous respect for Rizwan. I just don't think in this particular format, opening is the right place for him. Mudassir was talking about backup. One of the things I say as well is, there are a few people that are stars that you need to absolutely put in the spotlight and see how they perform. One of the criticisms about Pakistan's white ball cricket is that we're still playing in the 90s. Slow, and then bad at the end. There are a couple of batsmen that we have, a couple of cricketers that we have, actually three that I think that absolutely have got to get a chance because they are game changers if Pakistan puts them in the team. Saim is one. Azam Khan is another. I've criticized his fitness, but the risks that this boy has, the shots that he plays, there's nobody in Pakistan I've seen who plays these shots. It's almost like A.B. de Villiers. And then the third bowler is Zaman Khan. Zaman Khan. These are potential match winners. If we're not going to give them a chance here in New Zealand, then when do we give them a chance? They have to be in the team. Yeah, I'm glad you're itching to say something. Yeah, this is the key. So Australia का जो अभी जो जिस तरह वो जीते हैं ODI और T20 जीते थे UAE में, उनकी philosophy यही है. Their players, देखो Maxwell is not consistent. वो तो मेरे ख्याल 5-6 मैच में करता है, पर जिस दिन वो करता है उस दिन the game over. So they have match winners, Mitch Marsh, Cameron Green, David Warner. So they play 5 match winners. ठीक है. अब मैं पाकिस्तानी मिसाल लेता हूँ. साइम, फखर, इफ्तिखार in T20, these three in batting, or then add Azam Khan, Haseeb. You have 6 really good, talented batsmen. If they score on their day, they can be your match winners, right? So same thing with bowling. Zaman Khan needs to be tested. I would even say you can try also Shaheen. अगर 5 सारे गेम नहीं खेलता, Rizwan is captain. Amir Jamal. Try Amir Jamal, Zaman, and Wasim Jr. These 3. Amir Jamal से आपकी बैटिंग में भी डेप्थ आ जाएगी as an all-rounder. I think we need to concentrate on selecting match winners instead of safe players. अच्छा, एक जो चीज कुछ लोगों का ये भी है पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपने बाबर रिजवान को अगर रखना ही एज एन ओपनर, तो आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं शो करते कि भी अगर आपको चेस करना है अबाउट 140 to 150, फिर बेशक उनसे आप कर लो, बिकॉज उसमें आपको स्टेबिलिटी चाहिए. एंड वी नो कि वो दे पुट अ प्राइस ऑन द विकेट, इतनी आसानी से विकेट नहीं अपनी देते. जबकि अगर आपने अपसाइड पोटेंशियल के लिए जाना है बाय बैटिंग फर्स्ट, उस वक्त आप चेंज कर दो साइम को या फखर को, या एटलीस्ट वन ऑफ देम विद वन ऑफ बाबर और रिजवान के अंदर, ताकि यू गो फॉर द अपसाइड पोटेंशियल. इसके बारे में अब डू यू गाइस एग्री कि ये अप्रोच भी कुछ ट्राई कर लेनी चाहिए इस सीरीज में? यार मेरा ओपिनियन या करेंगे नहीं, या आप चाहते नहीं है कि ये हो, या आपका ख्याल है कि बता रहा हूं, रिजवान बाबर जो थे ना, they were your best openers by any standards. अब we are in denial. बाबर उस तरह रन नहीं कर रहा और टाइम हो गया काफी, 20 आई थिंक 1.5 साल हो रहा है. he is not in a great nick, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में. तो आई एम ओके. मैं आई थिंक सिंपल सोल्यूशन ये है कि 2 मैच में लेट देम, पहले 2 मैच में बाबर रिजवान को करा दो, मगर जब तक आप इन दोनों को रेस्ट नहीं दोगे, हटाओगे नहीं, हाउ डू यू नो कि साइम एंड फखर इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू? तो अगर वो भी अब साइम पे हमें एक्सपेक्टेशन ही ना, if साइम फ्लॉप्स बिग टाइम, then बाबर रिजवान can jump in again. तो बाबर रिजवान पेपर is still the best, but we have to rotate. Rotation is the key. This is I would to answer your question, Simon, I still would not do that, even if it's a target of 140, 150, because the goal of an opener in T20 is to make maximum use of the power play, the fielding restrictions, and neither Rizwan or Babar has a natural game that takes advantage of that. They have to play a little out of character to do that. They play ground strokes and they're successful. But you have cricketers who are designed, their whole modus of batting is to play aerial shots and take advantage of restrictions that are in place. Why not use them? So if you're chasing 140, 150, and these guys do it with a run rate of 8 or 9, look at what happens to your run rate. Suppose you're chasing 140, 150, and they get out early. Then what happens? Now you've got your stability. Now you've got your Rizwan. Now you've got your Babar, who are your safety nets. So why not? T20 is high risk. Go for gold. And then if you get gold, fine. If you don't get gold, you've got your security blanket in place to say, okay, chalo, we tried it, it didn't work. Now let's go with our other guys and we'll do it slow and steady. But if you never reach for it, how are you going to know if you can get it?
That's what Yeah. it blows my mind away, that we have the personnel to take advantage of the batting opportunities in T20 and we just don't use them. नहीं, It's ये just इसमें mind-boggling. काउंटर ये है Doesn't कि do- काउंटर ये है कि अगर वो बाद में आते हैं और हमारी पहले ही 2-3 विकेटें गिर चुकी होती हैं, तो वो कहीं और अपने मजीद शेल में ना चले जाएं, कि जितना कंजर्वेटिव है मजीद और कंजर्वेटिव ना हो जाए, तो या वो तो थोड़ी सी T20 is not a conservative game. T20 is ये an aggressive game. गलत फिलोसफी है। आप पूरी हमारा जो पावर प्ले जो है ना, it was one of the lowest in the world, ठीक है ना? Yes. We had the best from 5 to 14. कोई भी टीम देख लो यार, इंडिया में शर्मा चेंज हिज गेम। अभी तो वनडे हुए ना, तुम T20 में अगर वो आता देखना, he doesn't care. He can score, he's gonna score 20, he's gonna get out. He knows exactly what to do. आप ऑस्ट्रेलिया देख लो, स्टीव स्मिथ ओपनर नहीं आता T20 में। इसी तरह इंडिया में दे गो एक्सप्लोसिव शर्मा और जो भी होगा साथ उसके। तो T20 में you have to maximize power play. The opener job is to score 50 in 40 like in 5 overs and get out. हमारी फिलॉसफी पता नहीं कौन सी है। अब मैं उस दिन मजाक कर रहा था, रिजवान ने टेस्ट में जो बैटिंग की है अनबिलीवेबल। So he was playing T20 in test and he plays slow in T20. मेरी तो ये समझ में आ रहा है। नहीं, वो खेलने को ही हैज द शॉट्स, वो जो पसलियों से मारता है पीछे की तरफ, उसके पास शॉट है उसकी। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं, Saim, is this is the counterpoint. That's what Misbah said. You know, we all spoke to Misbah. We were fortunate to talk to Misbah. This is exactly what he said, which is the safe approach. And I get that. When you take the high risk approach, you're going to fail sometimes. But the potential for what you can get, I think the risk, you know, with anything you do, it's a risk benefit ratio, right? You know, and in T20, you have to go for the golden sea. And you're gonna fail sometimes, but you have your safety nets in place. I mean, we have unrealized potential, and I fear that we will never realize it because we never try. And the mindset has got to change. I love Babar, I love Rizwan, but we're not getting the most out of what we can get out of this Pakistan team. और अगर अच्छा चलें, इतनी जबरदस्त ओपनिंग था तो जिम्बाब्वे से कैसे हारे? 130 चेज नहीं हुए हमसे यार। अच्छा चलें, कुछ स्पेसिफिकली हाँ बात कर लेते हैं अब अपने बॉलिंग अटैक के बारे में। सो आउट ऑफ द पूल ऑफ प्लेयर्स दैट वी आर टेकिंग टू न्यूजीलैंड और हैव टेकन टू न्यूजीलैंड, उसके अंदर स्टार्टिंग ऑफ क्या आपकी यू नो बेस्ट 11 के अंदर आप कौन से प्लेयर्स डू यू एग्री के शाहीन, हारिस एंड जमान खान विद जमाल एज अ फोर्थ पेसर ऑलराउंडर, एंड प्लस अगर स्पिन के अंदर अगर आपको ट्राई करना तो विब्रार को रख लो। दीज आर सॉर्ट ऑफ 5 बॉलर्स, और जाहिर है फिर हमारे पास चाचा भी अगर बॉलिंग करा सकता है, या कोई और कॉम्बिनेशन के साथ आप जाना चाहोगे फॉर द फर्स्ट गेम। So I've basically left out Wasim Jr. and Usama and Abbas Afridi. यही है कि ना, रऊफ, शाहीन और नसीम है नहीं, दे आर सो एक्सपीरियंस और इतनी क्रिकेट खेलेंगे, PSL भी खेलना है इनको। तो आई वुड रादर प्ले आमिर जमाल, जमान एंड वसीम जूनियर, जिनको कम गेम मिलेंगे। और आई नीड क्या, लेकिन आपका कप्तान है ना शाहीन अफरीदी, शाहीन तो खेलेगा ना, वो तो कैप्टन है। तो कप्तान है, चलो ठीक है, तो इसलिए रिजवान को वाइस कैप्टन बनाया ना। तो फिर आप हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दोगे बेसिकली फिर टू यार उसने रेस्क्यू किया टेस्ट मैच में से, ही इज रेस्टेड फॉर दिस, ही इज नॉट गोना स्किप दिस। So he's going to play all 5 T20। एक दिन की तो 4-4 ओवर्स की तो बात है, 4-4 ओवर्स तो वो करा लेता है ना। आप उसको पांचों खिलाओगे उसको, क्योंकि एक 2 दिन का रेस्ट भी तो है। अगर वो टेस्ट मैच I think the answer is I think should he play 5 T20 or should we? As captain, I think he will. He's captain. He will. Rizwan can step in. Captain Kane Williamson as a captain, but he's a new captain, so he wants to establish his culture, and you don't do that by sitting and going out. I mean, that's what he's going to do, right? I agree with what you're saying. Rotate these guys. So Amir Jamal, PSL के वो सारे मैचेस खेलता है, 10 के 10 खेलता है वो, तो यहाँ तो वो कैप्टन है ना, तो आई डोंट थिंक। फिर आप फिर बेंच कैसे बनाओगे? हमारी ना अजीबो-गरीब फिलॉसफी। तो आप you rotate Haris Rauf out with हारिस को आप ड्रॉप कर सकते हो, आप जमान खान को रोटेट करा सकते हो। बिल्कुल या। तो इंडिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया 3-0 हराया शायद T20 या 2-1 हराया, ठीक है। रोहित शर्मा नहीं खेला उसमें कैप्टन, आई डोंट नो हु वाज इवन कैप्टन। लेकिन Rohit Sharma has been captain for years. This is a brand new captain. He wants to establish himself. टाइम तो देना है ना। I mean, I don't disagree with you, Mudassir, but I'm saying that you know he's not going to do that.
He's young. He होपफुली wants कोई to इंजरी prove ना हो जाए, himself. फिर मुदस्सिर हमें कहेंगे टोल्ड यू सो फॉर I know, but I don't disagree with him. ये यही सब डर है, वो 5 मैच खेल सकता है बैक टू बैक क्या 4 ओवर भी हाँ 4 ओवर है, बट वही है, फ्रीक इंजरी तो कभी भी हो सकती है किसी को भी, हाँ तो अल्लाह रहम करे। बट तो मगर चलो चलें, अच्छा। ठीक है, चलो शाहीन को खिला दो, मगर हम्म, आई थिंक हारिस को जरूरत नहीं है 5 खिलाने की। वी नीड टू ट्राई हारिस हाँ की समथिंग। जगह वसीम जूनियर को ट्राई yeah कर सकते हैं आप। या yeah वी नीड टू रोटेट। या yeah yes, rotation, that's the key. Rotate the fast bowlers 100%. Yes. हम्म। अच्छा, Is आजम खान का yeah आप जिक्र कर रहे थे एक दूसरे एपिसोड में, उसमें बात आ जाती है अगेन फिटनेस की, कि भाई इज ही फिट इनफ टू प्ले और नॉट, वुड यू स्टिल प्ले हिम डिस्पाइट द फैक्ट इज नॉट विजिबली इज नॉट फिट, और अगर वो Azam? खिलाएंगे तो फिर क्या आप रिजवान को फिर आप यार एज ए फील्डर यूज करोगे या क्या करोगे? देखो, आजम खान। आजम खान का कंपटीशन है ही नहीं पाकिस्तान में। मुझे नेम वन प्लेयर As a who batsman, as a batsman, तुम as बात a कर रहे batsman who can play हो। like him in T20 at number 5 or 6. हम्म Iftikhar and only Iftikhar and Azam हम्म Khan. And Azam Khan is different because he plays spin better than Iftikhar. रूमर पता है Yeah. क्या है? रूमर ये है कि आजम खान की कीपिंग इतनी बुरी नहीं है, मैंने खुद पर्सनली देखी। आप Oh, it's सीपीएल actually के pretty good. Huh. या अच्छी है। इसके he's tall and he has a excellent diving. It's just it's counter intuitive. तो रूमर ये है कि आजम खान जब खेलेगा ना तो एज अ कीपर खेलेगा और रिजवान एज अ फील्डर, बिकॉज़ रिजवान इज अ गुड फील्डर। लेट्स Because सी इफ I mean, again, Josiah बात कर रहे हो, look, it's almost embarrassing to see his size and to say he is an international cricketer, but his talent is so overwhelming that despite that, they're talking about having him play. The fact that he is there, the fact that they've selected him, means that they feel like he's good enough to play. So if you go through that whole process and then don't play him, then what's the point? I think you absolutely have to play him. And look, the two cricketers who I would say batsman-wise, you have to tell from the very beginning, Saim and Azam, you're playing all 5 matches. And don't worry if you fail. You play your game because this is your chance to show us what you're capable of on the big stage. And don't let them play for themselves. Play for Pakistan. They'll only do that if they know that their selection is guaranteed for all 5 matches. Do that because these are the two. Look, if we want to win the World Cup, we have to do more than what we've done before. And these two guys can do that for us. सही। अच्छा, उसके अंदर जो he was tried in the series against अफगानिस्तान। आई नो को ज्यादा हम बात तो नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ज्यादा मैचेस नहीं थे, बट ही डिडंट परफॉर्म, तो आई थिंक वो भी एक रीजन थी कि he was एक not, के 2 मैच खेला था, वो पिच 2 शारजा मैचेस में। की लो स्कोरिंग किसी और से वो रन नहीं राशिद होती। खान जो है, राशिद खान तो खैर किसी को भी मुश्किल दे दे, तो ही वाज अप अगेंस्ट राशिद खान एंड ही कुडंट परफॉर्म। लो स्कोरिंग। So my answer to that would be, someone fails. So what do you say to them? You say, okay, go back to domestic cricket, go back and play leagues and prove yourself again. That's exactly what he did. He failed. He didn't put his head down. He didn't go crying. He didn't say, I'm done. I'm retiring. He went back. He played domestic. He went to the West Indies and played CPL, and he was absolutely spellbinding in those. I mean, he went back, and one hopes that he corrected the deficiencies that were shown there. Again, in a few T20 matches, who knows? But all he's done is answer with performances. Yeah. So that's, I think he deserves a chance. अगर आप देखो ना, अगेन वो टॉप 3 क्राउडेड है, ठीक है ना, लिस्ट लंबी लिस्ट है, 6 ओपनर 5 ओपनर्स। नंबर 5-6 पे आप मुझे बता दो ना, आपके मुल्क में कौन है ही नहीं भाई कोई। तो एक और हसीब, क्योंकि मीडिया अभी उसके सोशल मीडिया पे इतना नहीं है, उसके फैंस और उसने इतना खेला नहीं है। ही इज रियली गुड मिडिल ऑर्डर टू। तो इन आई थिंक यही पूल है हमारे पास। तो अगर आपके ज्यादा प्लेयर हो, क्योंकि इमाद वसीम तो हिस्ट्री हो गया ना, वो तो ऐसे लग रहा है कि रिटायरमेंट ले नहीं पता। देखो ऑन टैलेंट, अभी मैंने आज आई है खबर, ही इज द फर्स्ट एशियन T20 like player to make 1000 run in a year and 50 wickets या कुछ ना। इमाद मगर वसीम तो अपने एटीट्यूड का भी मसला है कि भाई वो क्या, I don't want to play domestic. I think he's checked out, so I think we should not talk about him. I think he's made his own decision. ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि स्केड्यूल भी अब निकल आया है पिचेस का। आई डोंट नो कि यूएस की पिचेस अब कैसे बिहेव करेंगी, इफ दे सिमिलर टू द कैरिबियन पिचेस, तो वो तो हाई स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं उसके अंदर। और उसमें साइम अयूब हैज डन वेरी वेल रिसेंटली सीपीएल के अंदर, ही वाज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, और उसने अपनी फ्रेंचाइज को जिताया भी था फाइनल। उसको आप कैसे देख रहे हैं कि
ज्यादा से ज्यादा मौके मिलने चाहिए इन 5 मैचेस में, एटलीस्ट आपको 3 या 4 गेम है तो उसको मिलनी चाहिए। Punch, all five. और ऑल 5, आइडियली ऑल 5, मगर क्योंकि मुझे पता है कि क्या पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, तो आई थिंक गुड कॉम्प्रोमाइज विल बी के बाबर रिजवान कैन प्ले फर्स्ट 2 एंड लेट हिम प्ले नेक्स्ट 3 बैक टू If बैक एज अ प्रॉब्लम ये है, अब उसको नंबर 4 पे खिला देंगे, आई डोंट, देयर शुड नॉट बी I काउंट। think if you want to rotate, if he scores a big score, then Usko you can rest him 1 or 2. But if he keeps failing, give him all 5. He needs to have as much opportunity as he can to show himself. Same with Azam. Azam also, I baat kar rahe the CPL ke Azam batted very well there as well. So if that's the kind of pitches we're going to get in the World Cup, then Azam needs to बिल्कुल। play all और 5. ये दोनों एक ही फ्रेंचाइज में थे एज फार एज आई रिमेंबर, साइम और आजम, और दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया था। और तो सीपीएल आसान पिच नहीं है, सीपीएल में काफी खट्टा विकेटें भी आ जाती हैं, स्पिन तो तो सीपीएल में ना स्पिन ऑलराउंडर इज वेरी क्रूशियल। इमाद का बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है वहां पे, तो हमारे पास सिर्फ शादाब खान ही है। आई थिंक वो ओडीआई की वैसे बेचारे को पड़ती है, मगर टी20 में उसका रिकॉर्ड हमेशा ठीक रहता है। और उसामा मीर भी खेलेगा, शायद उसको चांस मिले। अगेन उसामा मीर इज डूइंग ओके इन बिग बैश, ही इज कैचिंग। और इसकी बॉलिंग उसामा को भी वर्सेस अबरार के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? कि हम जो ओडीआई वर्ल्ड कप में तो कहते रहे कि अबरार को चांस मिलना चाहिए, ही वाजंट पार्ट ऑफ द 15 स्क्वाड, सो उसको चांस नहीं मिला। अब क्या मौका है कि एज अ मिस्ट्री स्पिनर थोड़ा सा हम ट्राई कर लें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एंड गिव हिम सम एक्सपोजर बिफोर द वर्ल्ड कप? या यू वुड यू गो विद उसामा एज योर स्पिन ऑप्शन अगर कोई स्पिन के लिए हमें चाहिए हुआ तो? टी20 I में would मुश्किल। personally want to look at Abrar, but that's just my point of view. 100%. देखो Yes. अबरार, इफ ही हैज टू बी अमेजिंग टी20 में, इफ ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, if he takes starting 3-4 wickets, I agree we should try him. मगर अगर अगर उसका अगर उसने थोड़ी सी भी कम परफॉर्मेंस की ना, then you have too many options. You have like Shadab, you have Osama Mir, तो they go with who can field well and bat well. तो अगर हाँ, इब्रार बट को चांस अभी मौका है ना, मतलब सही, एक्सपेरिमेंटेशन तो अभी आप कर सकते हो, बाद में आप हाँ, वर्ल्ड कप में तो नहीं करोगे आप। you're बिल्कुल। right, they And should try him, but he cannot be a container then. Contain तो शादाब भी करता है. He needs to be a hey, wicket taker. I think Yeah, वही बात है, just sort of like we said about keepers, this job of a spinner is to spin and take wickets, you Yeah, know, wicket and taker. so contain, I don't even care if he's taking wickets, because that's the big issue I have with Shadab. Shadab is no longer a wicket taker, right. you know, and so I don't want, fine, Shadab scores runs and he fields well and it looks good and it helps us, but his primary role is to be there to bowl and take wickets. And so Abrar, if he is fit, absolutely 100% needs to get the chance, because Osama has had a chance and he should still get opportunity. He's there. They can take turns or rotate or even play them both in if it's a spinning wicket. But you have to look at what you have in Abrar and see what he has. And, maybe not even play all 5 matches. But once you know you have someone who can take wickets, then you hold on to that. And that's something you bring forward to the World Cup. नहीं, बिल्कुल मैं अग्री करूंगा। मेरा तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरह हम अफगानिस्तान की स्पिन की ऑप्शंस देखें, तो वहां पे तो हमारे जो मतलब राशिद खान वगैरह को हम कहते हैं कि यार इसके 4 ओवर निकाल दो, कि मतलब है कि विकेट्स इसको ना दो। हमारा अनफॉर्चुनेटली व्हाइट बॉल में ये हो रहा है कि विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं हो रहे, वो कंटेनमेंट की बात हो रही होती है कि यार अगर 6, 7, 8 रन पर ओवर ज्यादा नहीं पड़ते तो चलो दे डन अ ग्रेट जॉब। वो चीज नहीं होती कि यार विकेट्स निकालनी है। एंड शादाब वाज डूइंग दैट रोल, बट रिसेंटली जो उसकी डिप आ गई है उसके अंदर, सो आई लाइक टू सी कि विद शादाब मिसिंग तो उसका अबरार Yes. किस तरह करता है। मगर Maybe we don't ये need Shadab back. Yeah. लतीफा ही हो गया है, हम वर्ल्ड कप में हंगामा करते रहे, सब अबरार खिलाओ, आया नहीं। फिर ऑस्ट्रेलिया में एवरीबॉडी एक्साइटेड, अबरार खेलेगा, वो वार्म अप के बाद अनफिट हो गया। तो मुझे नहीं पता बेचारा न्यूजीलैंड में इज ही फिट टू इवन प्ले, नोबडी नोस। चलें, अभी तो हैं 1-2 दिन होपफुली। अच्छा, फाइनली बात कर लेते हैं आमिर जमाल की। टेस्ट के अंदर हमने बात की, बड़ा इंप्रेस किया उसने बहुत बॉलिंग और बैटिंग में, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काफी अरसे बाद जो हमें एक ऑलराउंडर की जरूरत थी आफ्टर रजाक एंड अजहर महमूद, तो उस तरह की कुछ वाइब्स मिल रही हैं। डू यू थिंक ही इज अनदर प्लेयर जिसको एटलीस्ट 3-4 गेम्स, आइडली 5 गेम में मिलनी चाहिए, ताकि हम जो एक कहते रहते हैं कि यार पांड्या जैसा कोई हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है कुछ, उसकी अगर हमें कमी मिल जाए और उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि जो उसने अभी हीरोइक्स दिखाई हैं टेस्ट में, कैन ही रेप्लिकेट द सेम इन द T20 सीरीज? इसके बारे में क्या कहेंगे? I mean, he's selected, so he should get the opportunity. I feel like his lack of pace will not translate very well into T20s, and even his batting. But he's there, so look. Everybody who is there needs to get a chance. 2-3 matches कम से कम उसको मिलने चाहिए.
I don't know that he's that ultimate answer that we think he is in Test cricket. It's a very different game. It's a very different animal. So I'm not 100% certain that he won't get hit around. But I think it's worth seeing. Again, a big step back, perspective की बात है जो मैं इतने दफा मैं कह चुका हूँ. Remember, we're just one T20 World Cup removed from being in the finals. We were in the finals in the last T20 World Cup, right? So we don't have to make sweeping changes. We need to find a few sparks here and there to add on to what we have. And so if Amr Jamal is someone who can do that, 100% try him, but we don't have to make wholesale changes. So give him a shot. Give him an मैं आमिर opportunity. की इसलिए भी बात कर रहा था कि उसको आपको याद होगा वो हमारा मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड, हमारी सीरीज थी. Yes. और मोइन अली जो था यानी वो 9 रन चाहिए थे या कुछ इतने चाहिए थे और उसने यॉर्कर पे यॉर्कर उसको और वो हारा हुआ मैच then yes, बिल्कुल, yeah. That was his debut, by the way, I think. That was his debut match. Very impressive. This test series was his debut too. So again, exactly. कुछ लोग होते हैं who just get bigger on a big stage. ऐसे बहुत प्लेयर, रिजवान is one of them. कुछ प्लेयर होते हैं उनमें टैलेंट भी उनका, जैसे इमरान खान का जो बैटिंग टैलेंट था ना, या यूनुस खान था. These are players who are mentally strong. उनसे ज्यादा स्किल होगी सईद अनवर में, या कुछ लोग होते हैं नेचुरली टैलेंटेड, साइम है. तो आमिर जमाल में कोई ऐसी चीज है कि when he gets a stage, he just rise to the occasion. तो कुछ हमारे बोर्ड ने ये सब करना चाहिए कि since he's on on the he's top of the world right now, so let him play. वैसे he has a confidence, बिल्कुल. Exactly. Crowded space है. You have Shaheen. Momentum है उसका और जो hunger है और जो उसकी वीडियोस में. So you have Shaheen, you have Rauf, you have Naseem. So it's a crowded space. But again, Naseem unfit hai. So I don't see any reason why not to rotate him. And this is the time when he's full of confidence. Let him shine. I mean, see what he can do. चलें जी, होपफुली आपको ये हमारी एपिसोड पसंद आई होगी और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं. कुछ ही दिनों में फ्राइडे को इन ऑकलैंड, सो होपफुली वी गेट टू अ गुड स्टार्ट. और वैसे भी जिस तरह हमारी डिस्कशन हुई है, बिग पिक्चर सोचना चाहिए. होपफुली जो आज से भी बात करते कि जो हम ट्वीक्स की जरूरत है गोइंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप, वो हमें आंसर्स मिल सके. इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच. कीप सपोर्टिंग आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट. पाकिस्तान जिंदाबाद.